Introduction. What are serious adverse events? A clinical trial always has an inherent risk of unwanted outcomes that can lead to adverse event, and this event can have a severe and adverse outcome to the study participants. For example, any study participant is participating in our trial. They are administrating our drug. If they are feeling like unwanted outcomes, such as steps are written that they have to take the administration drug, they have to administer the drug in this time, and after taking the administration, after taking the drug, if subject occurs any event that intended to be a serious, then we can say that serious adverse event. Now, for example, serious adverse event is the adverse event which afterwards going to be a serious health risk, that has a serious health risk or serious health risk or serious outcome in the study participant. Knowledge and awareness about classification of the serious event and serious adverse event can be very helpful for risk management and minimizing damage to save life of the study participant. Let me tell you one thing, that what is difference between adverse event and serious adverse event. So adverse event is the event which may be or may not be occur by the product, that is investigational product. Serious adverse event is more likely to occur with the that is IP. If IP is given to the subject, so if someone is having adverse event, that means that event which is not serious in criteria. So maybe it can be occur by the drug or may not be occur by the drug. But serious adverse event are the event which are more likely to occur by the drug. Now, knowledge and awareness. Okay, this thing I have. Next is criteria. Criteria for an event to be classified as a serious. We can consider the serious adverse event as the serious when if patient result in a death, if patient has a life threatening, that means prolonged hospitalization or जान को ज़्यादा खतरा होना, that is life threatening, requires inpatient hospitalization or prolonged hospitalization for existing hospitalization. Suppose patient ने दवाई ली है and later on पता चला कि he or she has to requires the inpatient hospitalization, and if that hospitalization continues and converted to prolonged hospitalization, then we can consider as a serious adverse event. For example, कोई भी patient ने दवाई ली और suppose उसके कार्डियक रिदम ठीक से नहीं हो रहे हैं एंड उसको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा और वो हॉस्पिटलाइजेशन उसका लॉन्ग हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया. सपोज एक दिन की जगह उसका हॉस्पिटलाइजेशन 7 to 8 days हो गया, तो हम उसको भी सीरियस एडवर्स इवेंट ही गिनेंगे. रिजल्ट इन परसिस्टेंस और सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट ने कोई दवाई ली है दैट आईपी और फिर उसका कोई एक बॉडी पार्ट ठीक से वर्क ना करे. सपोज
पैरालिसिस हो जाना, या तो फिर कोई एक पार्ट बॉडी का जो वर्क ना करे, या फिर एक पार्ट एक से ज्यादा पार्ट जो हमेशा के लिए फिर ऐसा हो गया कि ओके ये हाथ अब इसका काम कर ही नहीं रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, तो उसे भी हम सीरियस एडवर्स इवेंट ही गिनेंगे. रिजल्ट इन अ कंजेनाइटल एनोमली, अ बर्थ डिफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसने पार्टिसिपेट किया है क्लिनिकल ट्रायल में. आफ्टर दैट अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई भी पेशेंट है जिस जो प्रेग्नेंट है और उन्होंने अपना दवाई कंज्यूम किया है, उनका जो भी प्रेगनेंसी के बाद जो बेबी बॉर्न होगा और बेबी बॉर्न में कुछ डिफेक्ट हो, फिर जैसे कि कुछ वो बेबी चल ना पाए, या फिर ईयर ठीक से डेवलप ना हुआ हो, पैर ठीक से डेवलप ना हुए हो, हैंड्स ठीक से डेवलप ना हुए हो, तो ये बर्थ में डिफेक्ट आ जाए, तो दैट वी कैन say that it is a congenital anomaly. अदर कोई भी मेडिकल सिग्निफिकेंट इवेंट हो जाए उसे भी हम सीरियस एडवर्स इवेंट ही कंसिडर करेंगे. ओके, so many of us in many interviews they can ask that what is the criteria for a serious adverse event. So these 5 are the criteria you should know, that result in death, life threatening, prolonged hospitalization, significant disability, congenital anomaly. Okay.